ଆମର हाँ inconsistency को stop करके गोटे consistent to fill in the gaps जोड़ा okay जोड़ा estoppel रो orthogonal to stop okay to stop someone to misuse the loopholes of law okay to stop someone from taking advantage stop what someone from taking or to exploiting other parties okay सेटा तारा main aim टा में देखते okay last class में we had studied the aims objectives of your estoppel okay aji ame dekhiba types of estoppel what are the various types of estoppel seta first dekhiba tapare ame dekhiba ki what are the exceptions to estoppel okay what are the exceptions to estoppel now finally then we will see some of the questions ठीक अछि तो 10 टा क्वेश्चन मु देथिले लास्ट क्लास रे ता आंसर हम कहब ठीक अछि so this is the agenda for today okay that is first we go to types of estoppel then we go to exceptions and finally some questions huge this is what we will study so now take down the heading types of estoppel okay types of estoppel तो केते प्रकार estoppel अछि okay बहुत गुडे प्रकार अछि we will see one by one types of estoppel and we'll try to understand कोन तार concept अछि okay से जिंस टा में देखिबा so first type जोटा कि सबु हमें कहि परिबा common type okay जोटा सब बेले अपन देखिबे अच्छा before going to the types दीटा maxims लिखंतु related to estoppel estoppel रो जदि 10 मार्क रो ऊपर क्वेश्चन पडुची you might use any one of these maxims okay estoppel रो concept टा कोन कि no one should be disadvantaged जने exploit करिया तो नो अन्य मान okay किंबा जनकर पोजीशन जदि से चेंज करूची लीगली others should not be negatively affected by it okay ताकर किछि सेमति डेट्रिमेंट रे आउ जनकर एडवांटेज हे परिबो okay so first take down maxims okay दीटा maxim देखिबा आपनकर जो ऐप रे जो दिया हिची आपनकर नोट टा सेतरे पांचटा देछि ठीक है सेटा आपन निजो फ्री टाइम रे ताको देखि देबे हम पई दीटा इंपोर्टेंट so first take down allegens contraria allegens okay spelling टा भी कहि दोछि लिखि दियन सेटा allegens okay that is allegens then contraria contraria non s nonest okay non s est okay then addendus okay audis endus audis okay addendus okay तो हमें गेस करि परिबा टिके टिके जे हमें आ भीतर लैटिन बुझिल ऑडी ऑल्टम पार्ट ऑफ द ऑडी जेतरा अपन कहउचंती दैट मींस व्हाट समथिंग ऑडियम जेतरा हम कहउछु ओके हियरिंग सांगे रिलेटेड राइट सो एई जो पर्टिकुलर मैक्सिम ता अपन देखुचंती हम मानेटा कोन व्हाट इज इट्स लिटरल मीनिंग तो सेटा भी टिके ता साइड रे लिखि दियंतु ओके व्हाट डज इट मीन so basically it means okay जहा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आपनकर कोन estoppel roach okay that means one making contradictory statements is not to be heard okay so take down meaning hela one making contradictory statements is not to be heard one making contradictory statements is not to be heard okay
So he is changing his position. As a result, other parties are at a disadvantage. Okay. Then sir, one making contradict tapre kon rakile? One making contradictory statements. One making contradictory statements is not to be heard. Is not to be heard. Okay. जोटा लास्ट क्लास रे देखिदेली जण गोटे किछि पोजीशन नै चली ताकु अलाउ करा हबनी ता पोजीशन को चेंज करिया पई स्पेशली इफ इट इज detrimental to the other parties. Okay, because seeing his legal position, other parties have taken their positions, their defense or whatever सेमानो को जा भी कोर्ट रे कहबार अछि कि ताको लीगल पोजीशन सेना नै छ ये जदि निजर लीगल पोजीशन चेंज करले अगेन दे आल्सो हैव टू चेंज देयर पोजीशंस. Okay, so they will be at a loss. One making contradictory statements is not to be heard. It is first. Second, Nemo debe esse Nemo debet esse. The second, Nemo debet esse. Okay. Nemo debe esse loquitur. Okay. LOCUPLETIOR. Loquitur. LOCUPLETIOR. Okay. Ex aliena, EXALIENA, ex aliena. Ex aliena, then jactura, JACTURA. Okay, ROV mane pakapaki say. So just take down what is the literal meaning of this. No one ought to enrich himself. Okay. No one ought to enrich himself. No one ought to enrich himself at the expense of another. At the expense of another. Is it sufficient about first put it is fine. Okay, dita mandok 25 marks question generally dita better. Okay, but at least concept okay, dita same means like the first maxim basically tells you that one who is making the contradictory statement is not to be heard. Okay, our second maxim no one has that right that they will exploit the system and they will exploit others, and for their actions others will suffer. Okay, so next types को जिबा. Okay, so सबुठु common type रा estoppel जोटा आपण पढिबे जोटा हमें काली स्टार्ट करबा 121 BSA. तो सेथरे आपण कोन देखिबे ना promissory estoppel. Okay, if any promise has been made, okay, you cannot backtrack from that promise. आउ सही promise को नेकी आरो पार्टी सी किछि गोटे एम्ति एक्शन नै जाई चंदी कि पोजीशन नै जाई चंदी जोटा ताकू हार्म करबो जति आपण आपण प्रॉमिस टारू किछि चेंज कर. Okay, so that is number 1. Take down types of estoppel रे promissory estoppel. एम्ति कहया गले हमरो 14 to 16 types अछि estoppel जोटा कि हम गोटे देखिबा. Okay, so types of estoppel. Number 1, promissory estoppel. Okay, promissory estoppel. So as the name suggests, related to a promise. Okay, so jodi gote party kiछि gote promise करछि,
and the other party has, okay, he has taken that promise, okay, and he has done something. Now, if the promise is not kept, he will be at a disadvantage. It will be detrimental to the other party. Okay, tahle promissory estoppel will stop the person who has made the promise, the representation kala. Okay, कि सीए ताकर position टा change करी परिबे. Okay, suppose और गोटे बेस्ट एग्जांपल हमें नहीं परिबा. Suppose गोटे घर मालिक जन अच्छा. Okay, house owner जन अच्छा. तो सीए ताकर घर भड़ा देइछंती गोटे tenant. So the tenant is very pleased with the tenant, for example. ताको से कहउछंती कि ठीक अछि मु 2 years पर्यंत आपन भड़ा बढ़ेबे. तो सेथरे टेनेंट खुशी कि आफ्टर 6 months से किछि ब्यूटिफिकेशन काम करछे जोटा कि नॉर्मली से करि नता. ओके, से खुशी है कि से तंगरो ब्यूटिफिकेशन काम किछि एक्सपेंशन नीचे पॉकेट से कर देला. राइट. So based on that promise he has taken some action which now puts him at a disadvantage if that promise is broken. ओके, से कहले मु 2 वर्ष पर्यंत भड़ा बढ़ेबी से किंतु 3 मास पर से कहउछंती मार्केट कंडीशन चेंज हो गला, साइड वाला बढ़े देले भड़ा एमती व्हाटएवर जहाँ भी जिनस हैला तो भड़ाटा एबे मु बढ़ेबी. ओके, ये ऑलरेडी पैसा पत्र खर्च कर दिछन तो. ओके, सो हियर ही कैन, ओके, जे टेनेंट अछन he can invoke promissory estoppel. Okay, promissory estoppel से invoke करि परिबे कि नहीं आपण मते प्रॉमिस करथिले and that promise सेटा भी बहुत important. Okay, से promise टा it may not be supported by consideration amount. पैसा दीचन सेमति किछि प्रॉमिस दरकार नै. Even if consideration नथिला भी, okay, ताहेले भी generally if the other party has taken his position based on your promise, you cannot go back on your promise. Okay, of course that is open to your various तर जो exceptions हमें पढ़िया. For example, illegal promise करते हैं. ठीक है, you have done, you have made a promise which is illegal. तब केबे भी fulfill करी होगा. और जदि करिवे ताले आपण इजी illegal करू, fraud करिवे, right? तो सेगुड़ा सब exceptions to your estoppel, the concept of the doctrine of estoppel. जेटा देखिबा. So everyone understood what is promissory estoppel? Promissory estoppel रे एति कथा कि जदि गोटे promise करा होची even without consideration, okay, and that based on that promise the other party has taken a position or has done something, okay, which will act to his detriment, okay, which is detrimental to his interest if the promise is not kept. Okay, ताले से promissory estoppel invoke करि परिबो. Okay, so number 1 is promissory estoppel. तापरे नेक्स्ट जोटा कि सबटु कॉमन हमें जोटा कहिलु खाली लास्ट क्लास रो एग्जांपल्स मोकलु कि जणे गोटे स्टेटमेंट दउछन, जणे गोटे पोजीशन नउछन, he is representing his legal position. Okay, he will not be allowed generally to change that. Okay, exception study dele. So this is called estoppel by representation. So number 2, estoppel by representation. Okay, estoppel by representation. तो एगुडा मु जस्ट खाली तर जो लिखुची, okay, these are all types of estoppel. So estoppel, promissory estoppel, estoppel by representation. Estoppel by representation. Okay, so here it is quite evident what does it mean. Estoppel by representation. Okay, ताको legal position जने represent करूछन, right? So it may be through a statement, it may be through his conduct, his behavior. Okay, so jodi se semti kiछि तांगर represent करिछंती and the other party has accepted that and taken his position based on the position or the representation, okay, taken by the first party. First party will generally not be allowed to change that later. Okay, so seta hela estoppel by representation. Okay, so suppose let's say jane बहुत बड़ तांकर गोटे प्रॉपर्टी अछि. सर हां कोन
Sir, estoppel by representation means जने तार unauthorized person भी मु ownership रे अच्छी बोली कि से represent करूची से माने document टा property रो सर प्रॉपर्टी का एग्जांपल हम नहीं परियो बट इट जनरली कोन एनीथिंग यू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी कथा नो अलग जिंस भी आपण Any जदि किछि रिप्रेजेंट करी चंती ओके निजरो लीगल पोजीशन टाकू थ्रू ए स्टेटमेंट हे करे आपण कहिले कि ए जो 100 एकड़ जगह अछि आरो मालिक कहली मोर एटा 100 एकड़ जगह आपण गोटे रिप्रेजेंटेशन देले ठीक अछि ता धरे सामना वाला कहले ठीक अछि मु ता भीतर 2 एकड़ किनि आपण पैसा भी देदेला आपण ताको बिकी भी देले परे आपण कहि परिबेनी नहीं नहीं ये जो 2 एकड़ मु आपण को बिकिली सेटा मो जगह नु ठीक अछि you gave your position through a statement that this entire 100 acres belongs to me. Based on your representation, based on your statement, the other party bought 2 acres out of that. सी तो जाननी ना कि लैंड आपनकर मुह की कोन सी आपन को पोजीशन को देख के से तरह नहीं आरो भी एक्सेप्शन अछि ड्यू डिलिजेंस सी से बाहर कर परिबो आपन को जगह किनु आपन को जने मो जगह से जाई कि प्रॉपर अथॉरिटी टू इनकम्बेंसी चार्ट बाहर कर परिबो देखिबो कि कहा नारे अछि जमीटा ओके बट एनीवे सेटा हमें एक्सेप्शंस रो पड़े ठीक बात तो आपन परे जाई कि कहि परिबेनी कि नहीं सेटा मो जमी नथिला राइट सो सेटा हैला एस्टॉपेल बाय रिप्रेजेंटेशन आपन जहां भी रिप्रेजेंटेशन करछनी थ्रू ए स्टेटमेंट ओके थ्रू योर बिहेवियर थ्रू योर कंडक्ट सेटा भी होबो ओके एंड you cannot change that stand later and if other party or parties have taken a stand okay based on your representation which if you change will be detrimental to their interest tahale apna koi paribe ki okay they can invoke estoppel by representation you will not be allowed okay to change your position buji parle eta hela number 2 second type ro that is estoppel by representation तापर आसिला सपोज ए जो हम स्टेटमेंट कथा कहबे आपण जहां भी करे कथा आपण एटा गोटे फॉर्मल डॉक्यूमेंट रे लिखि के दैछन फॉर एग्जांपल इन एन एफिडेविट आपण एफिडेविट रे लिखि छन कि मोर से 100 एकड़ जगह रो मालिक होइली मु किबा आपण गोटे सेल डीड करछन का गोटे बिकि छथि ओके सो व्हाटएवर व्हेन you have made the representation statement etc on an official document then that is known as estoppel by deed okay that is third type estoppel by deed estoppel by deed which is what is estoppel by deed any formal document in that you have presented your representation your position legal position ta ki jaha bhi apna assertion verika kariya kata seti apna kariki deiti to seitu puni apna pachu ku jai paribe that is estoppel by deed suppose mo affidavit re lekhi deiti se 100 acre moro okay pore mo koi paribe ni ki nahi seta 100 acre ta moro no okay you cannot contradict those statements okay so eta hela estoppel by deed if you are writing or giving something in official record okay written form re officially konosi document re seta rahila right number 4 that is estoppel by conduct or it is also called estoppel in pay PAIS okay estoppel in pay estoppel by conduct number 4 that is estoppel by conduct or it is also known as estoppel in pay PAIS okay so as the name suggests it's basically आपनकर बिहेवियर की कंडक्ट ओके ता ऊपर एटा डिपेंड करै सो सपोज जो जगह अपन कहया कथा अपन चुप के रही छ सो इट इज मे बी योर एक्शन और योर साइलेंस सपोज यू आर द ओनर ऑफ दैट 100 acres आपण जानि छथि 100 acres मोर
आपण but you are not demarcated आपण boundary बुले ना but you know एई गछ करू एई गछ पसंद आपण जे नेबर अछंती मे बी he does not know से कोन करछंती ना आपनकर किछि पार्ट ओके से तांगर घरटा कंस्ट्रक्ट करछ जेतेबेले से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे यू नो कि से आपनको घर आपनको एरिया भीतर पसिकी ता घरटा करछ किंतु सेठी आपन कहबार थला it was your duty to speak at that time but you did not okay silent रहिले तेणु से लोक कोन भाबिला कि ठीक है जे हमर घर जगह नु ओके सो then what happens आपण आउ वर्षे पर कि 6 मास पर से घर बनै सरले तापर जितो जे कहबे एटा मो जगह आपण काई एटी घर करले ओके मेन जिंस वाला you had the knowledge if you don't have the knowledge then it's a different matter आपण ओके दीटा जिंस जोटा हमें देखिथिलु लास्ट क्लास रे you should have the knowledge निहाती भाबरे आपण नॉलेज थिबा दरकार ओके एंड you had the knowledge आपण पाके नॉलेज अछि से दीटा जगह केस एटी इंक्लूड होछ ओके जोटा आपण निजे जानि चल you had the knowledge then you had to act and you must or should have the knowledge आपण जानि थिबा दरकार थिला आपण प्रॉपर्टी आपण के केयर टेकर की खाप रखि तांते जे आपण इन्फॉर्म करता both these are included in it ठीक है तेनु एथरे कोन होची ना आपण को कंडक्ट एंटी थिला कि से आरो लोक जे घर कला ताकू जदि आपण इनिशियली जाय कि कहि देता नै एटा तो स्टॉप कर देता एबे से घर कर सारले आपण 6 मास वर्ष पर जाय कि त कहते एटा यू नो so basically he will invoke estoppel by conduct or estoppel in place because आपण जो 6 मास के 8 मास चुप हे कि रहिले ताकर गोटे बिलीफ हैला कि किछि भूल हे काहेना जदि भूल हे जांदा जार जमी अछि से आसी कहि जंदे करा ओके बुझी पाले तो दिस इज कॉल्ड estoppel by conduct or estoppel in play okay that is a number 4 ठीक है this is estoppel number 4 or types of estoppel 4th type of estoppel तापरे एटा गोटे हमें देखिबा जे क्वेश्चन भी अछि एटा that is estoppel by silence okay number 5 estoppel by silence okay which is known also known as acquiescence okay ACQUIESCENCE okay SCENCE it are Indian law re you know it's not there in Indian law right that is estoppel okay by silence ता माने कोन जोठी आपनकर ड्यूटी थला जे ए एग्जांपल ता आपण कहि पारे जोटा जस्ट कहबे ने सेठी कोन ना आपण कहि बार थले इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक बट यू हैव फेल्ड टू स्पीक okay and the other party must be unaware of the truth माने सी जाननी से जगड़ा का जेहेतु आपण किछु कहिलेनी ओके से भाबले से जगड़ा मोर होई केना आउ के किछु कहू ना ओके जति से एटा जानि तांते कि एटा आपण को जगह आपण बाउंड्री कर दे तांते कि गछ लगे दे तांते से लाइन करके तो से जानि तांते हां एटा आउ जण कर से सेठी जानि सी भी जानि सुनु कि गोटे मैलाफाइड इंटेंशन रे सेटा कर ही आल्सो डज नॉट नो ओके सो सेई जगह रे आपण किछि समय परे समाज पर से काम रे कर सारछि सेतो बळे जाय कि ओके आपण कहबे कि ना एटा मो जगह so you are the silent party here okay and you will be stopped from asserting your rights later on जेतो बेले आपनकर ड्यूटी थिला कहिया पई आपन को कहबार थिला आपन कहिले okay so that gave a belief to the other party कि मुजा करछि ठीक करछि सेटा कंस्ट्रक्ट कर देले घर so that is called estoppel by silence or acquiescence okay so एटा मन रखथिबे इंडियन लॉ रे आरो basic implementation will okay estoppel by silence एटा एक क्वेश्चन अछि हम जरा देखिबा कुछ कर तापर नंबर 6 estoppel by record okay estoppel by record माने को record judicial record something which has been judicially determined जोटा आपण CPC रे res judicata रे पढुछ okay so something that has been judicially determined and given finality okay सेम पार्टीज को भीतर ओके सेम टाइटल रे सेटा आउ थरे से केस रे से माने लिटिगेट करिबा ठीक अछि सो दैट इज estoppel by record or estoppel by res judicata
एटा हला नंबर 7 तो आ ऊपर क्वेश्चंस पड़ी छी अगरु डिफरेंशिएट बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपेल ठीक है सो दिस इज एस्टॉपेल ओके so directly upon res judicata भी लिखी परिबे और you can just write estoppel okay by record हैला एटा आपनकर 7 number 7 then come to number 8 that is estoppel by judgment okay estoppel by judgment so it already got a judgment kichi he jeichi okay sorry eta double ayala eta res judicata that is estoppel by record that is number 6 eta hala number 7 okay by judgment numbering the village okay so number 7 that is estoppel by judgment does the name suggest okay so this is a subcategory of the previous one जोटा estoppel by record में देखिलो एटा तार गोटे subcategory okay so if something has been already decided by court same matter upare same parties okay पुनी आउथरे litigation करि परिबे जदि से क्वेश्चन जोटा ऑलरेडी कोर्ट एडजुडिकेट कर सकते हां यदि गोटे नुवा किछि आपण करछंती okay something which has not been okay adjudicated earlier सेटा मैटर will be different but something has been adjudicated okay तो अपन ताको जेमती जहा भी बोले कि सपोज लेट्स से ए जमीटा कार मोरो कि आ जो लोक मो संगे कंटेस्ट करछि तो कोर्ट डिसाइड करले कि जमीटा मोरो नुह जमीटा तांकर ओके मु आउ दी तीनटा किछि अलगा जिंस सब देखै कि अगेन सेम जिंसटा को आउ आनी परिबेनी कि से जमीटा पुनी कार ओके तो that is estoppel by judgment right next number 8 equitable estoppel you know what the name suggests equitable okay so equitable estoppel it already agru podichi okay this has come in the exam already equitable estoppel right so 8 of we upon as you can see that it gives equality to all the parties okay so kahaku particularly basi biased ki unfair to some parties seta jemti hoba okay so that is equitable estoppel right so basically more position ru other parties they have decided their position I cannot change my position now okay so that gives equality to me as well as them right so jamtiki for example there is a agreement between me and my friend ame kathavarta hichu okay ki mu apanku mor ote land achi mu apanku biki debi etti ki taka fixed price okay 10 lakh taka re biki he is interested see kon kala ta ghara biki dechi se okay he has sold his house to get the 10 lakhs okay कि पैसा आनी के रखे मु तो कहि लैंड ता देबी से मते पे करिवो लैंड ता तार हि जु परे मु कहूची कि नहीं मु माइंड ता बे चेंज कर देबी मु सेटा आपन को so I back out of the deal so my friend can claim equitable estoppel okay because mo change of mind जो ताको बहुत असुविधा से घर का बिकी दी okay so if I have changed my mind it is negatively affecting him or it is okay to the detriment of his interests तेणु केना हम को लेखिया पे पडियो हमें जनरल तो सिंपल इंग्लिश में कोन लेखिया पे यदि मॉडर्न आंसर देखुथिबे एप रे बट ए जो किछिटा टर्म अछि सेटा एस्टोपेल रे डेट्रिमेंटल ओके एंड डेट्रिमेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टी ए फ्रेज टा यूज करिया पे पडियो ताको जते सिंपली अपन जब चाहे जब लेखिबे भाई
एटा लिखिले टिके मे भी 1 मार्क आपको अधिका मिले सेटा भी जोटा कि पैराफ्रेजिंग लीगल पैराफ्रेजिंग ता ऊपर भी गुरुत्व दबार अछि कांसेप्ट हम बुझी गेल मु ताको बहुत सिंपल इंग्लिश रे लिखिले वेरी गुड ता माने मो कांसेप्ट क्लियर अछि बट जेतो बळे माने कंपटीशन आसीबो एमती कि लाइक 32 वैकेंसीज पई आपनकर केते 600 700 पिला लेखुजनी मेंस सेतो बळे ई टाइप रो आपण कोन फ्रेज करिका यूज करछन सेगुडा बहुत मैटर करी ठीक अछि तो सो कीप दैट इन माइंड ओके इजी terms अपन जानिबा दरकार so that you understand it conceptually but when you have to write it in the exam ताले आपनकर legal phrases किबा legal vocabulary टा भी माइंड रखना okay so detrimental to their interest एई फ्रेज टा मन रखिबे estoppel ठीक अछि anyway तो एटा हला equitable estoppel हला number 8 next number 9 come to collateral estoppel okay collateral estoppel so as you can understand collateral mean what do you mean by collateral anyone can tell me so suppose it has the res judicata achi sei type ro sei family ro eta achi okay it is also known as eta bi likhi diyantu it is also known as issue preclusion okay to preclude any issue so also known as issue preclusion preclusion so ye kon korchi na it bars the re-litigation of issues that have already been decided okay जोटा कि previous legal proceedings रे legal decisions रे already सेटा adjudicate ही सारी okay so even if in subsequent cases the cause of action is different but the parties are same okay cause of action is different but parties are same ताले भी सही cases रे okay it precludes or bars the re-litigation of issues okay so it is a collateral estoppel so suppose for example जोड़ा हम कहली मु गोटे केस थिला मोर मो सांग भीतर जगाटा कहार कोर्ट कहले जगाटा मो सांगर मु एबे गोटे अलगा लीगल थ्योरी यूज करिकि किछि अलगा जिंस यूज करिकि अगेन सेम जिंस ऊपर कहूची ओके बट बाय यूजिंग अ डिफरेंट थ्योरी by using a different method किसी जगह मोर okay तो सेटा allowed हबन okay so subsequent cases रे okay even if it is based on a different cause of action same parties kara okay relitigation of the issues will not be allowed that is collateral estoppel okay next number 10 that is proprietary estoppel proprietary estoppel okay so what is the meaning of that proprietary माने कोन कहू मोर एटा proprietary right अछि गोटे जिंस ऊपर okay so suppose गोटे पार्टी कहउचंदी कि we have okay proprietary right हमर अछि आ हम सेटा आपन को दोछु आ जो आरो पार्टी सी सेटा ताको ठीक भाबी कि से माने कोन करचंदी ना से माने दे टेक सम actions or they take some stance कि जोटे पोजीशन से माने नउचंदी ओके तो से माने पहले कोन बिलीव करले सेकंड पार्टी से एया बिलीव करचंदी कि फर्स्ट पार्टी जो कहला कि एटा तांकर और तांकर बिहाफ रे हम एटा करते ठीक अछि so they have assumed that whatever they said is correct and they have taken actions which if proved आपको ये जाना पड़े कि नहीं सेटा सीजा कोतरे भूल it will be proved to be detrimental to the interest of the second party okay so seita hela proprietary estoppel it will not if it is invoked it will not allow the first party to change its position okay so let's say more friend bhitere okay gote
एमती मौखिक एग्रीमेंट है नॉट ए फॉर्मल एग्रीमेंट बस मोर गोटे जगह पड़ी तुम दरकार अच्छी तुम से घर कर ओके फॉर्मल एग्रीमेंट है कथबार्ता एमती है से मो सांग जी सी एग्री कर घर करदेला ओके घर कर कि समय कि लेट्स से 7-8 months पर मु कहली कि नहीं सेटा तो जरूर मो जगह तो मु आपन सेटा पळांतु आई वांट टू एविक्ट यू ओके फ्रॉम देयर सो ही कैन इन्वोक प्रोप्राइटरी एस्टॉपेल ओके मो ऊपर प्रोप्राइटरी एस्टॉपेल से ही कैन इन्वोक दैट ओके कहीं ना बेसिकली मु कहली एटा मो जगह तुमे कर घर करिक रुह मु सेटा कहिछु ओके ऑल द फॉर्मल एग्रीमेंट है ना ओके सो स्टिल मो फ्रेंड कर किछि ओनरशिप राइट्स ओके सेथरे रहउछि जेतु मुदा कहिथि ओके से काइंड ऑफ ए प्रोप्राइटर हे गले से केस ओके सो ही कैन इन्वोक प्रोप्राइटरी एस्टॉपेल अगेंस्ट मी बिकॉज़ जदि एबे मुदा से घरटा बनै दिजे मुदा कहि तमे एविक्ट कर देबी इट विल अनफेयरली हार्म हिम ताकर इंटरेस्ट रो डेट्रीमेंट ऑफ ओके इट विल डेट्रीमेंटल टू हिज इंटरेस्ट so he can invoke proprietary estoppel against me okay next आरो डिफरेंस एमती देखिले बहुत ही कम ओके मोर और लेस यदि आपण एनालाइज करिए मोर और लेस आपण लगे तो सब तो सेम टाइप रो दिस ओके नेक्स्ट नंबर 11 एस्टॉपेल बाय कन्वेंशन ओके कन्वेंशन माने कोन किछि गोटे आपण कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किछि गोटे आपण करछन ओके तो ता अगेंस्ट आपण जाउछन ओके जा पोजीशन से कॉन्ट्रैक्ट पे की एग्रीमेंट नहीं थिले ताको अपन डिनाई करछन यू आर गोइंग ओके अगेंस्ट दैट सो दैट इज एस्टॉपेल बाय कन्वेंशन तो आरो पार्टी अपन देखे देबो नहीं आगे ए क्लॉज रे या लिखा है वी विल स्टिक टू दैट यू कैन नॉट से नो नाउ यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशन नाउ दैट इज एस्टॉपेल बाय कन्वेंशन नंबर 11 एस्टॉपेल बाय कन्वेंशन there is lot of overlap between many of these estoppels okay types of estoppel अपन लगे एटा तो आ भरे आई लगछि राइट which is true next estoppel by license माने कोन एटी हमें ओडे परमिशन को लाइसेंस को estoppel by license okay suppose मु गोटे टाइप रो लाइसेंस किबा परमिशन देली जण मो प्रॉपर्टी टा यूज करि परिबे एमते एई वे रे ओके जे यूज कला परे ता परे मु ताको कहि कि नै एटा बंद कर दबा पे नै मु आपको अलाउ करिबे ठीक अछि सो दैट आई कैन नॉट रिवोक दैट लाइसेंस और दैट परमिशन ओके अनलेस सेंती किछि ओटे क्लॉज थिबो कि हां मु 1 ईयर पे देछि कोन राइट प्लस इफ आई वांट टू रिवोक ताले मते कंपनसेशन दबा पड़ियो कि नोटिस दबा पे पड़ियो सो दैट इज एस्टॉपेल बाय लाइसेंस okay here license basically means permission okay estoppel by license in which basically if one party gives permission okay which is the license to other party to use his property or perform any act okay आउ से लाइसेंस को रिलाय करी सेकंड पार्टी से ता काम होचंती ताले जे फर्स्ट पार्टी हेले जे कमिट करथिले सी आगु को जाई ओके रिवोक करि परिबेनी परमिशन और जदि भी करूचंदी कोनोसी गोटे अनफोर्सीन सिचुएशन जो ही हैज टू कॉम्पनसेट ताको नोटिस दबा पे पड़िबो कॉम्पनसेशन भी दबा पे पड़िबो ओके फॉर एग्जांपल मोर गोटे बड़ फार्म लैंड अछि मोर फ्रेंड फार्मिंग करिया पे चाहउछ मोर तो किछि होनी सेटे मो ठीक है आप लोग करन फार्मिंग okay but सेटा सेमती गोटे पड़ितला इट्स एग्रीकल्चरल लैंड बट आई हैव इन्वेस्टेड नथिंग so he now invests a significant amount of money सेठी से तकर इरिगेशन रो व्यवस्था करले जा भी करले से पुनी he started agriculture after some time 6 months ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଟା एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी ऑफ करंतनी ओके सो आई एम रिवोकिंग माय परमिशन और लाइसेंस जा भी तो सेटा सेमती करियो सी either I pay him back whatever he has invested 10 लाख टका इन्वेस्ट करचंती मु ताको कंपनसेशन हिसाब रे से इन्वेस्टमेंट प्लस किछि कंपनसेशन दे दे ताले इट इज फाइन अदरवाइज सेमती खालीटारे मु करि परिबिनी he will invoke estoppel by license okay so that is number 12 now come to number 13 that is judicial estoppel okay so previous legal proceeding रे जदि मु गोटे स्टैंड्स नै suppose there was a case
in which I am saying that Mr. A's character is very good, mu jani chi bahut bhola loko. Okay, eta previous gote legal proceeding ne mu koichi, right? तापरे आउ गोटे केस आसिला जोठी कि मु कहूची नै मिस्टर ए बहुत गोटे खराब, ठीक अछि, इट्स अ डिफरेंट केस. ओके, बट आई एम चेंजिंग माय पोजीशन, राइट, जोटा कि गोटे प्रीवियस लीगल प्रोसीडिंग रे मोर अलगा थिला. ओके, सेम जिंस ओवर एठी कोन कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, मिस्टर ए को कैरेक्टर विषय में गोटे केस रे कहिची भलो, आ गोटे केस रे कहिची खराब. सो दैट इज जुडिशियल एस्टॉपेल. ओके, सो it will stop a party from making a claim, okay, which is contrary to his position which he had taken, okay, in a previous legal proceeding. agru jo gote legal proceeding heitila sethare mu ja judicial position nei thili, ja position nei thili, ebe tari upore mu ko position ta change karuchi au gote case re, au gote legal proceeding, thik achi. But matter the same, mane ei case re mu jo example deli, it is about whether Mr. A is a man of character or not. First case में कोई is a man of character, एबे किंतु कुछ ना he is not a man of character. So city he can invoke judicial estoppel on me. So number 13, judicial estoppel. Now come to next, that is number 14. Okay, the doctrine of lashes hame joda padithilo, delay. Okay, so estoppel by lashes, you know, ama janchu बहुत जन कहती one of the best decisions is to take no decision. ठीक अछि, मु केस टा बढई चलछि. ओके, किंतु एबे नुआ लॉज आसिला करे सेटा पॉसिबल होबनी. अनरीजनेबल डिले जने करछन कोन पई तंका राइट्स को असर्ट करिया. ओके, so suppose the first example हमें initially नहीं थी, मोर गोटे 100 एकड़ रो घर प्लान टे अछि, से साइड रे कि गोटे घर कर देछि बहुत अल्प जगह रे, मु जानि छी किंतु मु किछि कोनी चुपे कि अछि कोडे बहुत दिन पर. ओके, 7-8 वर्ष पर आसी एकदम कहूछि आपण मो जगह और भागंतु को जा भी गोटे. Okay, so here that will be estoppel by lashes. If any party delays unreasonably his right to assert his right, okay, so he will be stopped, okay, by asserting that right later, because it is going to prejudice the interest of the other party. इतने दिन हला आपण किछि कलेनी, ताकू गोटे बिलीफ आसी गला कि किछि यू नो भूल नाही एथरे, बट एथरे हम एक्सेप्शन रे देखिबा. सी जानि नथिया कथा, सी जदि जानि चंदी एटा ताको जगह नु आपण के जगह, से ठीक जानि चंदी आ सी घर करछनी, ताले मैटर इज सेपरेट, ताले ओ एटी लागिबे, सेटा एक्सेप्शंस रे देखिबा. ओके, दी जण को मोटिव जदि बोनाफाइड थिबो ताले ठीक अछि, किंतु जदि दी जण जानि कि एमती करछंदी ताले सेठी ओ एस्टॉपेल, the doctrine of estoppel will not protect them. So that is estoppel by lashes, LACHES, estoppel by lashes. Okay, means delay. Doctrine of lashes today I put. Okay, unreasonable delay to assert your rights. Okay, the जनकर right ताको assert करिया कथा बहुत टाइम ପରେ से पहुंचे. Okay, so सेठी he can be stopped by estoppel of lashes. Okay, next, estoppel by waiver. एटा में बहुत जगह पढ़छु waiver रो कांसेप्ट ता फंडामेंटल राइट्स करी करी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़छु. ओके, estoppel by waiver, WAIVER, waiver माने कोन छाड़ कर दो, टू, ओके, गिव इट अप, टू वेव इट ऑफ. ठीक है, सपोज यू हैव अ राइट, यू आर वेविंग दैट राइट ऑफ. हां एटा मो जगह, बट ठीक अछि घर कर देछन कोन मु और सेतरे कस करबी नै, मु ना केस करबी ना कंप्लेंट करबी ना किछि हैला, सेटा हैला estoppel by waiver. बुझलो सर, estoppel by waiver. Waiver occurs, okay, केते बडे waiver होछि देन voluntarily you are giving up your right. Voluntariness is very important. तो सेतरे हम कोन कॉन्स्टिट्यूशन में पढि दिलु कि fundamental rights in our country cannot be waived, चाहिले भी. Okay, so you have your right to life, article 21 under it.
आपण कहबे नहीं छाड़ दउछु मोर दरकार नहीं आपण को दरकार थाउ कि न थाउ that in India fundamental rights cannot be waived, other rights can be waived, okay, fundamental rights cannot be waived, but in many other countries, European Union, North America, सेठी आपण waive कर दे पारे, okay, you can waive your fundamental rights also or basic rights also, okay. So anyway, estoppel by waiver माने if a party is giving up their rights, तांकर अधिकार जा से निजे स्वेच्छाकृत भाव रे voluntarily छाड़ कर दो, कोनोसी प्रेशर कोनोसी इंड्यूसमेंट, ओके, से थरे आसुना voluntarily they are giving up their right. तो जदि आपण सेमिति वेव करि नै छथि राइट ता परे आ ताको क्लेम कर दे, ओके. सो वंस यू वेव्ड ऑफ योर राइट देन इट इज गॉन. आगु को जाई कि आपण कहबे नै मो मोर राइट ता थिले मु ताको छाड़ देइथिली, सो दैट विल नॉट बी अलाउड, ओके. सेटा के से अलाउ करिवे कुछ गले. सो दैट इज estoppel by waiver, number 15. Next, number 16, last का जोड़ा, that is your estoppel by acceptance of benefits. ठीक है, already you have accepted benefits. ठीक है, बड़े transaction का benefits already अपन नहीं चल, तापर अपन कौन चिंता नहीं से transaction टा benefits नहीं वाला परे कि मुझे तो change करेगी, सेटा किम्ते हो, okay. Suppose मु जन को लैंड बिकिया पे कहूची 50% एडवांस नहीं देछ, ओके, आई हैव टेकन 50% ऑफ द अमाउंट, ता पर मु कहूची नहीं मते दबार नहीं, ओके. कोन प्रॉब्लम है वाला मोर जाई जो इश्यूज को कहि कि सो आई हैव ऑलरेडी टेकन द पेमेंट और a bulk of it 50% नहीं देछ, so the other party will invoke estoppel by acceptance of benefits against me, ओके. कि आपण ऑलरेडी बेनिफिट्स नहीं चंदी तेनु एबे आपण सेटा मना कर करे, इवन इफ मु रिटर्न करिया पे भी कहिबी तथापि से डिसएडवांटेज रे रही, ओके. सो दैट इज estoppel by acceptance of benefits. Number 16, types of estoppel, okay. So this is basically the types of, okay, various types of estoppel. So now you take 5 minutes, you 16 types हमें देखिलु, just go through it one by one, go through with the doubt अछि ताहले मते पचर, otherwise we will go to the next part, last part for today, theory by, which is exceptions to estoppel. See, estoppel will always not work. There are many situations, okay, circumstances, joti ki doctrine of estoppel will not work. These are the conditions of exception that we will see. So just go through these 16 points or 16 types of estoppel. If you have any doubts, then you can ask. बहुत गुडे आरो intersection अछि, माने आगोटा आठु पूरा सेम टाइप रो लागु जति दिला, ओके. सो बहुत अपन को इंटरसेक्शन मिले. Okay, so let us go to exemptions. Exemptions, okay, to the doctrine of estoppel. Exemptions to the doctrine of estoppel. Okay, the first exemption is fraud. Okay, so the fraud किछि होची ताकू आउ, okay, your doctrine of estoppel will not cover. ठीक है, तो नंबर 1 है fraud. ठीक है, so what a fraudulent transaction है कि what fraud होची, the estoppel is not going to protect that. So number 1 is fraud. Second है illegal acts, any act, transaction, process, position which is illegal. Suppose ଆମ ଦେଶରେ betting is illegal or lottery is illegal. For example, ଗୋଟେ state ରେ lottery illegal ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ lottery business related କିଛି ଗୋଟେ କରିଛି, ସେଠି ମତେ estoppel help କରିବ. Okay, so number 2, illegal acts of transactions.
Second exception, illegal acts or transactions. Illegal acts or transactions. Next, see, estoppel, এটা भी পড়েছি আগুলো কোন that estoppel cannot override statute. Law को estoppel override କରିପାରିବ. So number 3, statutory prohibition. যদি ଗୋଟେ statute ରେ law ରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହବନି ତ ଆପଣଙ୍କର doctrine of estoppel is not going to protect them. So number 3, statutory prohibitions. That is the third exemption. Next, fourth exemption person. Okay, in cases where this is your doctrine of estoppel will not work. That is the mutually malified intention. So number 4, when both parties are aware of the truth. Okay, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ମୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ମୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ମୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଥାପି ସିଏ ଘର କରୁଛନ୍ତି. both parties are aware of the truth. So estoppel will not protect. ତାଙ୍କୁ ବି protect କରିବନି, ମତେ ବି protect କରିବନି. Okay, so when both parties are aware of the truth, when both parties are aware of the truth. ହେଲା ତମର କଣ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାଲିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି କେମିତି ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କିଛି କହୁନି ପରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବି କି ଏଟା ତ ମୋ ଜାଗା ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ଇଏ କରିବି ସୋ ମୋର ମ୍ୟାଲିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପନସେସନ ଆଣିବ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ତ ମତେ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି whatever ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଲିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଇନିशिଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କିଏ କିଛି କହିଲେନି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତ ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ହେଇଗଲା. Okay, ताको malified intentions है, सी जानी चाहिए कि ये ताको जगह. So when both parties are aware of the truth, they will not be protected by the doctrine, okay, of estoppel. Next exception person, number 5, fifth exception. That is estoppel against statutory authorities. Constitutional authorities, statutory authority or a university, a body which has been created by any law, by an act of parliament or state legislature or local act, against estoppel so that be exception. Exception against statutory authorities. Okay, number 5, exception against or estoppel against statutory authorities. So statutory authorities against estoppel kama kariba. Okay, so that is exception number 5. Now you come to the next exception, that is cannot override law. Question estoppel cannot override law. Jodi gote law achi, okay, so estoppel, doctrine of estoppel cannot use to nullify okay any kind of law. So number 6, cannot override law. Estoppel cannot override law. So it is a 6th exception. Cannot override law. Tapare next 7th exception person. Estoppel, okay, and future contracts or representations. Okay, so our exception है promissory estoppel. मैं promise करছি आपनको ये करूँ सर मैं ଗୋଟେ promise करছি ठीक है. Otherwise बाकी जितने cases रे estoppel काहे ऊपर काम करছি recently current facts ऊपर. Okay, not for future guarantees ऊपर से काम करती, right?
So estoppel and future conduct of representation. So it does not, it only applies to current facts, okay, not future conduct or promises. Okay, exception ala promissory estoppel. So future representation and contracts. exception those which are covered by promissory estoppel. Okay, ताको छाड़ देले बाकी जहां भी आपण करंट रिसेंट थिंग्स एबे जा अछि सेही फैक्ट्स ऊपर एस्टॉपेल काम करिवो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल काम करिवो. Okay, next number 8 percent, that is your exception number 8, that is criminal cases. Estoppel in criminal cases. Okay, generally it does not apply to criminal cases. Okay, generally does not apply to criminal cases. Doesn't apply to criminal cases. Tapare ninth exception person, that is to representation कराइछ जाको other parties से representation ऊपर rely करिके ताको position टा form करछन. If that representation is made without authority, suppose I am not related to company A, किंतु मु जाकी कहूची मु हेली company A रो manager आउ हमर गोटे land अछि हमें बिकिया पे चाहू. Okay, so representation, if it is made without authority, then your doctrine of okay estoppel will not cover it. So number 9, where representation okay is made without authority. So representation without authority. Next 10, against minors. So estoppel okay cannot stop minors from asserting their rights, especially contract cases. About जानते minor okay तारो जदी तारो capacity नहीं contract पाई okay तो से but in the minor stage he enters into a contract. Later जेते बोले से major हो चंदी से चाहो चंदी contract को void करिया भाई सेठी हम estoppel काम करिबा. So estoppel does not work against minors. Okay, minors cannot be stopped from exercising their rights okay by the doctrine of estoppel. So number 10th exception apanako rahela against minors. Okay, that is against minors. Now come to exception number 11, that is estoppel by silence. Okay, so estoppel by silence already hame dekhi thi acquiescence hame dekhi thi. Okay, tamane kono na jodi apanku कहबार थिला you had the duty of speaking out, you did not speak. Okay, jodi taro exception कोन हबो, suppose I did not have the knowledge or I did not have the duty to speak. Sei jagah re okay estoppel by silence it will not work. Okay, so number 11, estoppel by silence. Okay, so first hela dita instance rahebo exception re kono ki it was not my duty to speak up. Okay, so no duty to speak eta hi pare kimba
मोर नॉलेज ही नथिला गोटे दिन सेमती होची बोल नो नॉलेज एई दीटा कंडीशन रे these are the exceptions to estoppel by silence तो एई केस रे मु साइलेंट रहिली ओके जदि मो ड्यूटी ही नु किछ कहया पई आई रिमेन साइलेंट सो एटा मो करे इट विल नॉट वर्क ओके आ जदि मोर नॉलेज ही नथिला मु जतले जेल रे थिली आ ये मोर जमी के नै गरा चांस ही नथिला जानिया पई ओके तो सेठी estoppel by silence सेठी आ मो करे लागू होबो that would be an exception to estoppel by silence okay so this is point number or exception number 11 tabare 12 which is very important that is mistake of error okay that is mistake or error एथरे किछि मैलिफाइड नाही जेन्युइन मिस्टेक है सपोज मु जते बेले गोटे घर किनिली गोटे लैंड किनिली से प्लॉट नंबर 302 टा से प्रिंट एमती हेची सेटा से 3 टा 8 देखाला तो मते प्लॉट नंबर 802 ही देखाला कि जी भी पढ़ले से देखियो रे 802 कि भूल रे प्रिंटिंग मिस्टेक हे जेची मु 802 को जाई कि मु घर कर देची ओके परे जते बेले से तारो एक्चुअल ओनर आछुंदी ओके तो ए इशूटा आसिला राइट सो एठी I will be protected because it was a mistake or there was error from the say printer side ki ja bhi ho mistake or error genuine mistake or genuine error without any intent of malafide that is number 12 then next come to number 13 that is contractual terms जदि गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे किछि एक्सक्लूसिवली लिखा हिछि कि एया हबोनी तो सेठी आउ आपण doctrine of estoppel invoke kari paribe okay specific number 13 specific contractual terms specific contractual terms okay specific contractual terms tabare number 14 public policy so estoppel does not apply to public policy okay so estoppel jodi contrary to public policy achi it is against public policy it cannot be applied so number 14 against public policy or contrary to public policy okay tapare last exception toda me dekhiba that is third party rights so estoppel does not okay affect third party rights tamane kono party A or party B vitare kon hichi so party C okay they will not be affected right so next exception or last exception is third party rights okay तो जो माने से रिप्रेजेंटेशन जे कले आउ से रिप्रेजेंटेशन को बेसिस बनै कि ताकर पोजीशनिंग जे नेले से दी जनो अफेक्टेड हेबे ठीक अछि थर्ड पार्टी जे एथरे से प्रेजेंटेशन बेले से नथिला तार से डायरेक्टली रिलेशन किछि नै तो सी ओके ताकू आउ प्रोटेक्ट करिवनी डॉक्ट्रिन ऑफ ओके estoppel थर्ड पार्टी राइट्स विल नॉट बी अफेक्टेड ओके और कैन नॉट बी यूज्ड सेटा हमरो एक्सेप्शन मोटे छिबो so these are the 15 exceptions to the doctrine of okay estoppel so go through it यदि किसी doubt अछि ताले पचरंतु so more or less we have seen the basics all आमे ये को जाइनु we have not gone to the भारतीय साक्ष्य अधिनियम okay to the sections 121 रु आमे काली स्टार्ट करी तो मु लास्ट क्लास रे आपन को देइथिलु 10 टा क्वेश्चन ओके कहिथिलि कि सेटा हम पूरा सारिनी पूरा सारला परे हमें डिस्कस करिबा ओके सो नाउ रेफर टू दोस क्वेश्चंस ओके सर एक्सेप्शंस रे टिके थर्ड पार्टी राइट्स विषय टिक कहि देबे सर एक्सेप्शंस रे टिके थर्ड पार्टी राइट्स सॉरी कौन कहले सर एक्सेप्शंस रे जो लास्ट पॉइंट अछि थर्ड पार्टी राइट्स हां हां आ विषय टिके सर टिके हां जदी तबे धरंतु मु गोटे रिप्रेजेंटेशन दोची मोर गोटे सांग संग रे
Okay, mo sango, we are talking about my land. More of a land, land time, whatever is being discussed. ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ ହେଲା କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଜିଶନ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲି ଆଉ ସିଏ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ବିଟୱିନ୍ मी एंड माय फ्रेंड ତାଙ୍କ फ्रेंड is directly not affected by it so he is a third party in this case okay so this doctrine of estoppel will protect me or my friend depending on the situation but he is not affected okay na se representation kala bele thile na se anyway affected hochandi he is a third party basically okay so this protection of the doctrine of okay estoppel will not be given to him takku milibani sir buji parle Yes, sir. okay so now let us go to the 10 questions जोटा मु देइली फर्स्ट क्लास रे okay let me just bring it to the screen first ଆସିଲା okay so let us come to the first question it already mo discuss karthili okay eta group re bhi you can directly go there and see question 1 which of the following is not a recognized form of estoppel under Indian law okay ମୁଁ ସେଟା ପଠେଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ just ମତେ WhatsApp ରେ ପିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ହଁ ସେ ନମ୍ବର 943700 2210 2210 डॉक्टर सुहाग सुंदर नंद just a minute okay just share कर दूंगी तापर ଆମେ ତାକୁ डिस्कस okay okay so question 1 question which of the following is not a recognized form of estoppel under Indian so এটা discussion বেলে ମୁଁ କହିଲି that is okay जोटा silence okay that is estoppel by silence ठीक अछि किंबा एटी कोन देखि सेटा डी जोटा estoppel by okay acquiescence so D would be the answer promissory estoppel हमर अछि proprietary भी अछि और estoppel by record अछि
Okay. So although it's very close to it, but in the direct तरह use हमारा Indian law रे generally नहीं. Okay. Now come to question 2. So D will be the answer. Question 1 the answer is D. In the context of estoppel by representation. Okay. Estoppel by representation, which of the following conditions must be satisfied for estoppel to apply? The representation must be made with fraudulent intent, obviously. The party seeking estoppel must have relied on the representation to their detriment. Okay, जो मैंने estoppel invoke करिया पे जाऊँ जल्दी, तांको सी जल्दी position allow करेला change करिया पे जे representation कर जल्दी, ताले एमन को loss हो. Okay, so they should have, it should be against their interest. So B is correct. Okay, C, D, B देखी दवा. The presentation must be related to future intent or promise. Okay, the party seeking estoppel must have independent knowledge of true fact. That is also not needed. So B is the correct answer. Okay, question 2, B would be the correct answer. Right? So mark B as the correct answer for question 2. The party seeking estoppel must have relied on representation to their detriment. Now come to question 3. Which of the following best distinguishes promissory estoppel from equitable estoppel? Okay, conceptual question ta bolare puchon. Promissory estoppel or equitable estoppel में difference चा कुछ. Promissory estoppel requires a formal contract while equitable estoppel does not. सेमिति किसी भी नहीं. Okay, promissory estoppel applies to promises about future. जोड़ा मैं exception को देखी लूँ. While equitable estoppel applies to representation about present facts, which we had seen that is correct. सेटा में देखते ठीक चला. Equitable estoppel is limited to cases of proprietary interest, while promissory estoppel is not. Promissory estoppel always involves a legal obligation, while equitable estoppel never does. So B is the correct answer. Promissory estoppel applies to promises about the future, while equitable estoppel applies to representation about present facts. Okay, so B is the answer. Next, question 4%. Which of the following situation would not give rise to proprietary estoppel? So say charita situation. First, let us go through the situations. Then we will discuss A assures B that B can build a house on A's land, and A relies on this assurance. B A allows B to occupy a portion of land for farming without a formal lease, and B makes substantial investments in the land. Okay, we would not give rise to proprietary estoppel. A verbally agrees to sell land to B, but the agreement is not formalized, and B takes possession. Okay, A makes a casual statement about giving B a property in the future, but B does not. B does nothing in reliance on it. Okay, तो से ताऊपर rely करूँ. ठीक है. से गोटे representation देले. Okay, but B कोनोसी कामता ऊपर की action नहीं नांती, relying on that statement or the promise. So को जगह proprietary estoppel होगा नहीं. जेतु से rely करना थी. He has taken no action based on the assurance or the promise or the representation. So no, it has been proprietary estoppel. So D would be the answer. A makes a casual statement about B, casual statement about giving B a property in the future, but B does nothing. Okay, in reliance on it. से rely करना. तो देखो सत्य भावी नहीं कि ता ऊपर किसी से काम करनी कि investment करनी किसी एमती करनी जो थरे जल्दी position टा change कला. Okay, A ताले किसी आंखा interest टा harm होगा. So D would be the answer. The fourth answer would be D. Okay. Now come to question 5.
Which of the following is not a condition for invoking res judicata as a form of estoppel? Not a condition, okay, for invoking res judicata as a form of estoppel. The matter must have been heard and decided by a competent court. The decision must have been made on merits of the case. The parties in both cases must be same or previous to the same. Obviously, these are okay requirements for res judicata. The judgment must have been based on a procedural technicality. Must have been based on a procedural technicality. The same requirement like res judicata judgment must have been based on procedural technicality. Same thing. Okay, so D is the answer, not a condition for judge. Okay, not a condition for judge. So D is the answer. So question 5 D would be the answer. Okay, the judgment must have been passed on a procedural technicality. So this is not a condition for invoking res judicata. Next, number 6%. Under the doctrine of estoppel by deed, which of the following is true? Okay, estoppel by deed. A party is estopped from denying any fact stated in any legal document that they have signed. Okay. Estoppel by deed applies only when a contract is breached. A party is estopped from denying the truth of a statement made in a formal deed, okay, even if the statement was made mistakenly. Or estoppel by deed can be invoked only in criminal proceedings. So C would be the correct answer. A party is estopped from denying the truth of a statement made in a formal deed, even if the statement was made mistakenly. Okay. That is your estoppel by deed. এটা আপনাদের অ্যাপ রে দেখিবে जो डेली टेस्ट फोल्डर अछि सेतरे आरो डिटेल सॉल्यूशन टा आपनको मिल जिवो ठीक अछि देखि गो थ्रू द सॉल्यूशन केना कोन पई जिनसटा हेछि सेटा भी आपनको जानिबार अछि सर क्वेश्चन 6 रा आंसर टाटी आउट क्वेश्चन 6 रा आंसर है सी a party is estopped from denying the truth of a statement made in a formal deed even if the statement was made mistakenly. C is the answer for question 6. Now you come to question 7. In collateral estoppel, which of the following elements is not required? The issue in question must have been litigated in a prior action. The party must, against whom the estoppel is invoked, must have been a party or privy in the previous case. The previous decision must have been a default judgment. The issue must have been essential to the judgment in the previous case, not required. Okay, which of this is not required for collateral estoppel? Right, so C would be the correct answer. The previous decision must have been a default judgment. Same requirement. Okay, other requirements were there. That is correct. So C would be the answer. 7 no C mark karandu. Next, come to question 8. Which of the following is true regarding judicial estoppel? Okay, so first statement was it prevents a party from taking inconsistent positions in separate legal proceedings. Okay, true. So this is correct. It prevents a party from taking inconsistent positions in separate legal proceedings. Example gote case re kochi ki Mr. A no character holo. I gote case re kochi Mr. A no character kharab. Same loko Mr. A. Okay. So baki uda dekhiye darkar nahi, but still then let us go to the other options also. Judicial estoppel requires a finding of fraud to be applied. Something judicial estoppel applies only in criminal cases. That is also okay, not correct. It prevents the court from reversing its own judgment. That is also wrong. Okay, so mark A as the answer for question 8. Next, come to question 9. Which of the following is not true of equitable estoppel?
it can be invoked by party to enforce a legal right that they knew existed all along. Not true. Okay. So obviously this is wrong. It can be invoked by a party to enforce legal right that they knew existed all along. So the jani chanti eta mo right thila aguru. Okay. So basically it can be invoked by a party to enforce a legal right that they knew existed all along. That is not true of equitable estoppel. Equitable estoppel focuses on preventing unfairness or injustice, correct? It can arise from silence where there was a duty to speak, that is correct. It requires reliance by party invoking estoppel. The rely kariki semane kichi steps nahi thibe, as a rely karnanti tale to matter is different. Detriment effect hetiba darkar. Detrimental tako interest ko hetiba darkar. So A will be the answer. So mark 9 as A. Okay. Mark question 9, answer would be A. Now come to question 10, last question. In which scenario can estoppel by record be invoked? Okay. So let us see the options. A party tries to deny a fact established by a previous court judgment involving the same parties. So, okay, already it has been recorded. So, this is correct. A party tries to deny a fact established by a previous court judgment involving the same parties. So, that estoppel by record can be invoked here. Okay, so A will be the answer. A party makes a representation that they are the owner of certain property in a deed. Okay, a party makes a promise that it is not backed by consideration but includes reliance. A party asserts inconsistent legal positions in separate cases involving different facts. A would be correct. Okay, so these are the 10 questions. So if you are getting more than 6 correct, concept of bujiwale. Okay, eta apanଙ୍କର daily test folder ku पढेबे app रे. Okay, तो सेतरे तारा detailed solutions तारे देखिदेबे. तारा explanation रो जो देछि सेटा तारा पढले कहीं ना एई क्वेश्चन टा यस वाला किछ माने नहीं. Explanation टा क्लियर हे गले हमरो केते गुडे questions explanation रु भी आसी करे. बुझि पारे. So any doubts regarding estoppel? Okay, the concept of estoppel and all, you can ask me. Else question 10 no sir A hobo na answer. A. Okay, so go through the notes. Notes to already upload app re. Okay, BSA folder hi achi. So just videos just go through the notes. Okay, so kalia mein start kariba BSA ro 120. So ita hala basic concepts of estoppel. So ame mara jani lobe estoppel ta kon. Ebe amaro statutory provisions kon. Bharatiya Sakshya Adhiniyam re. So 121 ro ame kali start kariba seta. Okay. So we'll stop here then.